मैं अगर उरी का एक सक्सेस रहा है तो मैं उसे उरी के साथ ही रखता हूँ, उसको मैं भूत पे नहीं आने देता। इन जनरल एज जस्ट एन आर्टिस्ट आई एम अ वेरी वेरी एक्साइटेड एंड एन एंथुसियास्टिक पर्सन ऑन सेट। मुझे ये होता है कि जो पार्ट मिला है उसको मुझे सच्चाई से करना है। हाय, दिस इज विकी कौशल एंड यू वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। On huge popular demand, we have with us finally national award winning actor Vicky Kaushal. Pleasure having you with us. Thank you, Faridoon. How does it feel, national award winner? बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है एंड या फील ब्लेस्ड कि इतना खूबसूरत, इतनी कोई खूबसूरत चीज इतनी जल्दी हुई लाइफ में। I was just discussing with my colleagues a short while back, and so I was watching one of your interviews, one of your radio visits, and you have these observations about background music कैसा होगा भूत में, and whether it's maybe over the top or maybe it should be like it'll be subtle. So my observation was that this guy will surely direct at some point of time. No, seriously. नहीं फरीदून, the more I'm doing films now ना उतना ही मुझे लगता है कि यार ये डायरेक्शन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। It's a huge responsibility and it's not only about making a film, it's not only about shooting a film. It starts from creating a story, bringing a team together, pitching it to producers, and then getting an approval from 200 people and getting them to your frequency, then making your film according to your vision, your expression, and बहुत कुछ सीखना है। अभी वो डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। I'm sure, but जैसे मुझे याद है कि उरी में भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपने बताई थी कि एजेंट्स होते हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज जो लोग यूज करते हैं, जो साइन लैंग्वेज जो यूज करते हैं, दैट वाज समथिंग दैट यू आर टोटली इन्वेस्टेड इनटू योर कैरेक्टर, एंड आई हैव मेट मेनी एक्टर्स, यू नो, बट आपका जो प्रिपरेशन है वो मुझे कुछ थोड़ा सा काफी अलग लगता है। I like it. Faridun, I really enjoy the process of making a film. Like even if I'm on a set, I'm very curious about what the other departments are doing. कि अच्छा ये कैमरा अगर ऐसा लगा रहे हैं तो वो क्या सोच के ऐसा लगा रहे हैं, ये डायरेक्टर अगर ऐसे एडिट सोच रहा है तो वो क्यों ऐसे सोच रहा है और ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है, तो वो साउंड क्या होगा। बट विद द हॉरर जॉनर वो और भी ज्यादा सोचना पड़ा मुझे, विच आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, क्योंकि काफी कुछ आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निकल वे में हो रही है, एक्सप्रेशन तो है ही, आपकी स्टोरी टेलिंग चल रही है ऑन एन इमोशनल वे, बट वो कितना अंधेरा होगा, कितना लाइट दिखना चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन आप विजुअली दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कहाँ से कितना साउंड आएगा, ये सीन साइलेंस में होगा या इसका अलग एक साउंड ट्रैक आएगा, उस हिसाब से मेरे एक्सप्रेशन सटल लगेंगे या लाउड लगेंगे। तो हॉरर में बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर फिल्म में जैसे मैं ज्यादा अपने मॉनिटर में काम चेक नहीं करता हूँ व्हाइल आई एम शूटिंग फॉर अ सीन, बट इन दिस आई हैड टू सिट विद भानु एंड सी कि अच्छा यार ये अगर तू बाद में वो जो पैरानॉर्मल थिंग दैट आई एम लुकिंग एट वो जो अगर तू पोस्ट में क्रिएट करेगा, देन हाउ वुड इट एग्जैक्टली लुक सो दैट माय थिंग इज इट जस्ट फियर और एम आई गेटिंग रिपल्स्ड आल्सो, क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं होते ऐसा कुछ देखने के, यू नो, कि बिकॉज इट्स एन अगली लुकिंग क्रीचर, देन आप इट्स नॉट जस्ट फियर, इट्स आल्सो कि क्या है, मतलब यू नो, सो ऑल ऑफ दैट नीडेड टू बी चेक्ड, सो इट बिकेम अ वेरी टेक्निकल थिंग, बट इन जनरल एज जस्ट एन आर्टिस्ट आई एम अ वेरी वेरी एक्साइटेड एंड एन एंथुसियास्टिक पर्सन ऑन सेट। लाइक आप मुझसे 3 घंटे वेट करा लो, 5 घंटे वेट करा लो, मैं वैन में कम बैठूंगा, मैं सेट पे कोने में ज्यादा बैठूंगा, देखता हूँ कि कौन क्या कैसे, लाइटमैन भी कहाँ चढ़ के क्या लगा रहा है, क्या टेक्निकल टर्म्स क्या है, समझता रहता हूँ मैं। But you were an assistant director. I was an assistant director on Gangs of Wasseypur. And even I believe in Bombay Velvet you had a small role. Yes, I did. I had a very small role in Bombay Velvet where I was the assistant to KK's cop part. Yeah. That's what Karan Johar said at the promo launch. Yeah. Your journey as an actor from Masan to Raman Raghav and Razi and then Sanju, you just have this entire big film in terms of box office, and Uri goes on to, I think, do magic stuff, but not only in terms of box office, but even in terms of the impact that it had. Now you're having Bhoot. So this journey that you had from an award-winning film that goes to Cannes, and now these expectations of box office from you. How has the trajectory been like? It's been very organic. That's what I find it very thankful about. कि organic रही है. It's been step by step. Nothing's been overnight. And what you were saying about these expectations and the films doing in a certain way, I actually leave the success and failure with that film only. I don't take it to my next film or I don't take it in general with me. That is for the people to look at me in whatever light they want to look at me as. But मैं अगर उरी का एक सक्सेस रहा है तो मैं उसे उरी के साथ ही रखता हूँ, उसको मैं भूत पे नहीं आने देता। In my functioning for भूत, in my processing for भूत, अगर किसी फिल्म का फेलियर रहा है, कुछ क्रिटिकल रहा है, मैं उसी फिल्म तक रखता हूँ, उसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। So it helps me be sane, it helps me be true to my craft,
and not let get that contaminated by success or failure. अगर किसी फिल्म को सक्सेस मिला है तो I keep saying to myself that वो फिल्म को सक्सेस मिला है. It's not, of course, उस सक्सेस के fruits even I am kind of मुझे भी मिल रहे हैं उसके, और उस वजह से मुझे भी पॉपुलैरिटी मिल रही है और प्यार मिल रहा है. ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की है और वो मेहनत रंग लाती है अगर आपके लोग कहते हैं कि आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आई है. बट मैं उसको उस फिल्म के साथ ज्यादा जोड़ता हूँ rather than me. अगर उरी सक्सेसफुल है तो वो उरी सक्सेसफुल है, और उरी के सक्सेस की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ. आई डोंट रियली टेक दैट अपॉन माई सेल्फ, सो इट हेल्प्स मी काइंड ऑफ बी ऑन अ वेरी न्यूट्रल ग्राउंड एवरी टाइम आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म. Now, talking about Bhoot, the director is someone who likes the genre as well. Does that help that he understands a lot of technicalities? Very much so. It's already a scary thought अगर एक डायरेक्टर आके बोले मैं हॉरर फिल्म बनाना चाहता हूँ पर मुझे अच्छी नहीं लगती हॉरर फिल्म, वो ऑलरेडी एक हॉरर फिल्म है. तो it was very helpful that Bhanu is a horror film enthusiast. वो हॉरर फिल्म देखना पसंद करता है. उनकी रुचि already when he's thinking of a story it goes into that genre automatically. That's always helpful that instinctively that's happening from him. You know, and it's all about the instinct when you're trying to create a film. So in this, like, I am scared of watching films, horror films. Shashank is scared of watching horror films. Karan is scared of watching horror films. So we needed a director who loved watching horror films. There's something interesting about you that when you met for Uri, you told me that you've lost the muscles that you had gained for Uri. Usually what happens in the film industry that, you know, that if people like to flaunt their biceps and you know their physique and they stick to it, the roles are written around that, and they always are very conscious and narcissistic about the way they look. But you don't fall into that trap. I don't, because मुझे I want to be remembered for my parts more than I want to be remembered as Vicky Kaushal. So मुझे ये होता है कि जो part मिला है उसको मुझे सच्चाई से करना है. So अगर if there is a guy who has to be thin, I can't go with a six-pack abs and bulging biceps, and it won't. I'm not true to the character. And no matter how good I am, how good-looking I am, how मैं 18 abs भी लेके चले जाऊँगा, but if it's not the requirement of the character, people are not going to appreciate those abs, you know, or that look. So I have to be very, very true to my part. So, and there are many examples that you look at where you feel कि यार, you know, you don't have that kind of a body, but there's also this thing about having a presence in front of the camera. Like, for example, for me, the best example is like when Dhanush comes in front of a camera. That presence is much stronger than probably a guy who's got the best physique in the world. His presence is that strong. You know, so I feel if you're true to that character, mentally, emotionally, and physically, people are going to accept you and love you for that. Hi, this is Vicky Kaushal, and you're watching Bollywood Hungama.